Hello friends, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. I hope you all were doing well. जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें SS Pediatrics और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट जब भी मैं अपनी वीडियो लेक्चर अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आज जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जिसके बारे में वो है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, वैसे तो पीडियाट्रिक्स में हम यूजुअली इसको स्टडी करते हैं। ओटाइटिस मीडिया क्या है हमारे पास? इट इज़ द बेसिकली इन्फेक्शन एंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर ऑफ अ पर्सन। और ये जो है वो मैक्सिमम टाइम जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है अमंग द चिल्ड्रन लेस देन 15 ईयर्स, और उसके बाद भी हो सकते हैं बट कॉमनली लेस देन 15 ईयर्स जो बच्चे हैं हमारे पास उनमें देखने को मिलता है ओटाइटिस मीडिया। और इसकी फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास क्रॉनिक एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगी एक्यूट और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया क्या होता है। दोनों में एक जो हमारे पास जो मेन डिफरेंस है दैट इज़ जो एक्यूट है वो यूजुअली लास्ट अप टू 6 वीक्स तक रहता है एंड क्रॉनिक जो होता है वो मोर देन 6 वीक्स से ज़्यादा चलता है। इसी के बारे में आपको बताऊँगी। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ओटाइटिस मीडिया। स्टार्ट विद द टॉपिक acute otitis media. Definition: inflammation of the middle ear may also involve inflammation of the mastoid, petrous apex and perilabyrinthine ear cells. Incidence most common in children under 15 years of age. क्लासिफिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया एक्यूट एंड क्रॉनिक। फर्स्ट मैं आपको एक्यूट के बारे में बता रही हूँ, देन अदर्स आर सीरियस ओटाइटिस मीडिया, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया एंड suppurative ओटाइटिस मीडिया। Acute otitis media definition: it is an acute infection of the middle ear usually lasting less than 6 weeks. Etiology: what are the etiological factors which cause the acute otitis media? Some bacteria, for example Streptococcus pneumoniae and H. influenzae. Upper respiratory tract infection and infection of nasopharynx. Pathology of otitis media, acute otitis media. First stage is the catarrhal stage, is characterized by occlusion of eustachian tube and congestion of middle ear. Then in the stage of exudation, exudate collects in the middle ear and eardrum is pushed laterally. Initially the exudate is mucoid, later it becomes purulent. Stage of suppuration: pus in the middle ear collects under tension, stretches the drum and perforates it by pressure, necrosis, and the exudate starts escaping into external auditory canal. Stage of healing: the infection starts resolving from any of the stages mentioned and usually clears up completely without leaving any sequelae. Then stage of complication: infection may spread to the mastoid antrum. Initially it causes catarrhal mastoiditis, the congestion of the mastoid mucosa, and stage of the coalescent mastitis and later empire of the mastoid. Pathophysiology: due to etiological factors, upper respiratory tract infections, bacteria, then exudates and edema in the middle ear which decreases the retraction of the tympanic membrane which causes serous exudate in the middle ear which leads to the pus formation and tympanic membrane rupture which cause acute otitis media. Then clinical manifestation for the acute otitis media. First, in the catarrhal stage, stage of congestion, क्या clinical manifestations हो सकते हैं? Fullness or heaviness in the ear, severe ear pain at night, deafness, tinnitus, ringing or buzzing in the ear को हम कहते हैं tinnitus, and autophony, spoken words of the patient echo in his ears, and tympanic membrane gets retracted, cartwheel appearance of eardrum, and the absence of light reflex. This is the right tympanic membrane viewed through the speculum. Stage of exudation: all symptoms become more severe which were explained in the previous stage. Then in the stage of suppuration: perforation of eardrum, otorrhea with mucoid purulent discharge and pulsatile discharge.
with each arterial dilation. Stage of healing, in this healing start, and in the stage of complications, spread of infection to the mastoid. Diagnostic evaluation with the history, with the physical examination of the ear properly, with the help of otoscope and culture for identifying the bacteria, and audiometry and tympanometry for checking the hearing. Treatment for the acute otitis media, systemic and local. In systemic, antibiotics such as tetracycline, erythromycin, ampicillin or penicillin for 6 days. Systemic decongestants, phenylephrine, ACL. Then local, glycerin, carbolic ear drops or warm olive oil reduces the pain before perforation of tympanic membrane. Antibiotic drops, chloramphenicol, spit boric drops is used for perforation of tympanic membrane. Then surgery, myringotomy, the tympanic membrane is incised to drain the middle ear cavity, and myringopuncture, puncturing the eardrum with a long thick injection needle and aspirating the middle ear contents. Complication, chronic otitis media, which leads to the hearing loss and perforation and poor speech development. This is the perforation in the acute otitis media. So this is all about my topic acute otitis media और chronic otitis media. I will discuss in my further video lecture. अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें and please like and share the videos. Thank you.